Hello friends, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. We have discussed in our previous video about the adjective. So now in this lecture we have started this topic from the adverb. So we will be talking about the definition of adverb, its different kinds, and its proper sequence of the adverb in your sentences. So what is an adverb? An adverb can be defined as a word which increases or changes the meaning of a verb or an adjective or another adverb or a preposition and a conjunction. देखें, adverb का काम सिर्फ वर्ब का मीनिंग चेंज करना नहीं है, बल्कि एडवर्ब काम क्या कर सकता है? एडवर्ब वर्ब का मीनिंग चेंज भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है. इसी तरह एडजेक्टिव का मीनिंग चेंज भी कर सकता है, एंड इन द सेम वे इट कैन आल्सो इंक्रीज एंड इट आल्सो चेंजेस द मीनिंग ऑफ द एडवर्ब एंड अ प्रीपोजिशन एंड अ कंजंक्शन. ठीक है, जब ऐसे तमाम वर्ड्स के साथ लाइक वर्ब, एडजेक्टिव और another adverb or a preposition and conjunction, इनके साथ अगर adverb आ जाए तो उसकी मीनिंग में तब्दीली लेकर आता है. ठीक है, like for example he runs fast. ठीक है, अब यहां पर just verb के बाद adverb लिखा है. So this adverb changes or increases the meaning of the verb, that is run. He runs, वो भाग रहा है. ठीक है, he runs, it is the intransitive verb. He runs, वो भाग रहा है. लेकिन जब हम इसके साथ फास्ट लगाएंगे तो it changes and increases the intensity of running, the intensity of the verb he runs fast, कि भाई वो बहुत तेज भाग रहा है. Like he runs very fast. अब देखें यहां पर तो सिर्फ इसने एडवर्ब ने इस वर्ब का इंटेंसिटी चेंज किया है. अब यहां पर he runs very fast. अब एक एडवर्ब ने क्या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग चेंज भी की है और इंटेंसिटी भी बढ़ा दी है. He runs very fast. In the same way, he is intelligent and he is very intelligent. So here very is the adverb which changes the meaning of the intelligent, which is adjective. So there are almost 8 types of adverbs. So the first type we have the adverbs of manner, second adverbs of place, then adverbs of time, the adverbs of frequency, adverbs of certainty, adverbs of degree. Then comes the adverbs of interrogation or the interrogative adverbs. Then comes the relative adverbs or the adverbs of relation. So starting with the first type of the adverb, that is the adverb of manner. Adverb of manner can be defined as it tells us about the way, the manner or the method of happening something. देखें, adverb of manner हमें कोई भी इवेंट के होने का जो मेथड है, कोई तरीक़ाकार है, वो उसके हैपनिंग के बारे में बताता है. फॉर एग्जांपल कि भाई कोई काम कैसे हो रहा है, जल्दी हो रहा है, स्लोली हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है, एंड इट इज हैपनिंग इन अ बैड वे. लाइक फॉर एग्जांपल हैप्पीली ना खुशी से, एंग्रीली नाराजगी से, स्लोली क्विकली, हरिडली ऑनेस्टली, और फास्ट हर्ड लेजीली, ब्रेवली प्रॉपरली एक्सेट्रा. देखें ये तमाम वर्ड्स आपको समथिंग का हैपनिंग बता रहा है कि भाई कोई काम हो रहा है तो किस तरह हो रहा है. ठीक है, तो अगर ऐसे वर्ब्स आपको कोई भी वर्ब बताएं, ठीक है, कि भाई कोई काम हो रहा है, देखिए वर्ब का काम है कि भाई कोई काम होना, इट्स द एक्शन ऑफ एनीथिंग. ठीक है, लेकिन उस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है वो हेल्प करती हैं टू इंक्रीज और चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स. लाइक एंड वी हैव 3 रूल्स फॉर दिस. देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर कैन कम इन द बिगिनिंग, सेंटर और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. देखें, एडवर्ब ऑफ मैनर को हम चाहें तो स्टार्टिंग में लगा दें सेंटेंस का, चाहे तो सेंटर में लगा दें, और चाहे तो इस सेंटेंस के एंड पे लगा दें. सेकंड रूल कह रहा है कि भाई नेवर पुट एडवर्ब ऑफ मैनर बिटवीन द मेन वर्ब एंड इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, देखिए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये सेंटेंस के मेन 3 कंपोनेंट्स है. ये कह रहा है कि भाई एडवर्ब ऑफ मैनर को कभी भी मेन वर्ब और जो वो वर्ब जो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजिटिव वर्ब जो कि अपना डायरेक्ट एक्शन ट्रांसफर कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उनके दरमियान कभी भी नहीं लगाना. ठीक है, अच्छा इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू बाद में. देन कम्स सम एडवर्ब ऑफ मैनर ओनली कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, लाइक फास्ट एंड वेल. अच्छा, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के जो कि सेंटेंस के एंड में ही सिर्फ आ सकते हैं. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम
at the beginning or center or at the end. Like for example, he slaughtered his cow angrily. So now here you have put angrily, the adverb of manner, at the end of the sentence. He angrily slaughtered his cow. देखें, you have put angrily at the center. Then angrily he slaughtered his cow. अच्छा, उर्दू में इसका एक ही मीनिंग होगा, ठीक है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है यू कैन चेंज, आइदर इट्स एंड, सेंटर और एट द बिगिनिंग. जो सेकंड पे बात की गई है कि भाई एडवर्ब ऑफ मैनर को आपने मेन वर्ब और इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान कभी नहीं लेकर आना. फॉर एग्जांपल, ही एंग्रीली और ही स्लॉटर्ड एंग्रीली हिज काउ. ठीक है, अब इसमें जो इसका जो पोजीशन होगा, sentence will be wrong. Got it? Then comes the second type of adverb, that is adverb of place. It tells us about or the word which point out the place. ये सिर्फ आपको जगह के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, here, there, nowhere, over there, or name of a place like Islamabad, Quetta, Karachi, whatsoever you want to use the name. So whenever there comes a name or you indicate towards any particular place, so it means that will be the adverb of place. Like for example, here they came yesterday, or they came yesterday, or they came here yesterday. The function took place over there. So now here and over there are the adverb of places. Then a third comes the adverb of time. Adverb of time tells or point out towards any time. ठीक है, किसी भी टाइम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन फराहम करना, it will be telling by the adverbs of time, like the minutes, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, now, before, noon, morning, late night, evening, every day. It tells about the age, like last week, last month, last year, yesterday, tomorrow, whatsoever you want to use. So when there comes the connotation of a time, so it will be telling by the adverbs of time. Then we have certain sequences for using these adverbs. When you use only two adverbs, like adverb of place and adverb of time, so this will be the sequence. You have to put the adverb of place first and then the adverb of time later on or in the aftermath. If comes three verbs or three adverbs of, like for example, manner, adverb of place, then adverb of time, so the sequence will be in the same way as written over here. Like for example, we have written he came here, or he came to Islamabad yesterday. He came here, it tells about the place, here or to Islamabad. So these both words tell you about the place, adverb of place. Then yesterday is a time. So this sentence is written according to the first sequence or formula. Then comes, she performed confidently at the stage in the annual function. So first comes adverb of manner, then comes adverb of place, annual function, because annual comes annually once in a year. So there are many verbs that are called the travel verbs, where there is the involvement from one place to the other place happened. Like for example, go, travel, come, rush, migrate, enter, reach, etc. देखें, इन तमाम वर्ब्स में से जो कि मूवमेंट शो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, तो इस सिचुएशन में हम जो सीक्वेंस ऑफ द एडवर्ब यूज करेंगे, तो सबसे पहले आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव दैट शी वेंट टू पाकिस्तान हैप्पीली लास्ट वीक. अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें, शी वेंट, वो चली गई, सो इट्स अ ट्रैवल वर्ब. देन अगर इस सिचुएशन में ऐसे वर्ब्स आ जाएं जिसमें ट्रैवलिंग शो हो रहा हो या मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शो हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में आपने पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस शो करना है, जो कि पाकिस्तान है. ठीक है, शी वेंट टू पाकिस्तान हैप्पीली, देन एडवर्ब ऑफ मैनर, देन कम्स लास्ट वीक एडवर्ब ऑफ टाइम. इसके बरक्स जो हमने लास्ट में देखा था,
अगर ऐसे वर्ब्स जिसमें मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शो नहीं हो रहा तो इसमें आप पहले मैनर को लगाते हैं, फिर प्लेस और लास्ट में टाइम। लेकिन जब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शो हो रहा हो तो उस सिचुएशन में आपने ये सीक्वेंस जनरेट करनी है। देन वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल, आसिफ वेंट टू स्कूल। देखिए इसमें भी जो वर्ब है इट शोज द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टू स्कूल इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन कम्स एंग्रीली एडवर्ब ऑफ मैनर, इन द मॉर्निंग और टुडे। अगर आप टुडे इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आप उसमें से जब प्रीपोजिशन इन हटा देंगे। आसिफ वेंट टू स्कूल एंग्रीली टुडे और आसिफ वेंट टू स्कूल एंग्रीली इन द मॉर्निंग। देखिए you must note one thing while using the adverbs like more than one adverbs of the same kind, जब भी same kind के more than two adverbs यूज करेंगे तो फिर आपने ये रखना है कि भाई सबसे पहले जो उनमें से स्मॉलेस्ट, मतलब आपने जब प्लेस का रखना है उसमें से एक छोटा सा जगह है तो उससे बड़ा जगह है और उससे बड़ा जगह है। लाइक फॉर एग्जांपल टाउन इज a smaller place, then comes a city, then comes the province, then comes the country, then comes the region like the continent. Okay, अगर इसी तरह अगर जो टाइम की बात हो रही हो तो सबसे पहले सेकंड्स आएगा, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद आवर्स, उसके बाद टाइम ऑफ द ड्यूरेशन like morning, evening, then comes days, then comes weeks, then comes months, then comes years. Okay, so here we have the same situation and the sequence. तो सबसे पहले आपने जो उस एक ही चीज का जो स्मॉलेस्ट वर्जन है वो आपने लिखना है, फिर उसका जो सेकंड या बिगर वर्जन है then the biggest one. Like for example, we reached to Karachi at 5 o'clock in the evening on Wednesday. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो है ना एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज हुए हैं, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा है वो अपने टाइम मतलब आवर्स यूज हुआ है, उसके बाद एक ड्यूरेशन है जो कि इवनिंग में, उसके बाद डे आ रहा है। अगर चाहें तो इसमें ईयर भी लगा सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई से इन 2024, इन 2023, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना स्मॉलेस्ट, देन द बिगर, देन द बिगेस्ट। इन द सेम वे ही वाज बोर्न ऑन 11th, it is a date or a day, then month November, on 11th November 1999, then comes the year. Okay, at fourth number we have the adverb of certainty, okay, which shows about the surety of anything, like definitely, certainly, doubtedly, okay, surely, obviously, probably. So these are the adverbs of certainty. Then comes the adverb of degree like hardly, too, enough, quite, fairly, very, highly, etc. This shows about the degree कि भाई कोई काम हुआ है, बहुत कम हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, सही तरह से हुआ है या सही तरह से नहीं हुआ। Then comes the adverb of interrogation or the interrogative adverbs. When we use the WH family, and these are 4 WH words which are to be considered as the adverbs of interrogation. These are when, why, how, and where. When, why, how, and where. When we use these words at the beginning of a sentence for the purpose to ask a question, then they will be called as the adverbs of interrogation. Then at 7 comes the relative adverbs. Okay, when the WH words, the same WH words when, why, how, and where are used between 2 classes. देखें एक डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट मतलब 2 क्लॉसेस को आपस में मिलाने के लिए एज अ रिलेशन बिल्ड करने के लिए अगर इन चारों WH वर्ड्स को यूज करें तो देन विल बिकम द रिलेटिव एडवर्ब्स लाइक आई नो व्हेन दे विल कम या आई डोंट नो व्हाई शी लेफ्ट द जॉब. So dear students, we have the last adverb of frequency. It tells us about the 14 frequencies. Like it starts from always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, never, seldom, normally, frequently, constantly, hardly ever, generally, and scarcely ever. So now comes to the meaning of these words. Always means all the time, har waqt, hamesha. Usually comes for generally, aam taur par. Often for frequently, aksar. Sometimes, kabhi kabar.
occasionally means now and then, ठीक है, गाहे बगाहे, अभी नहीं तो कभी और टाइम, ठीक है. Rarely means seldom, शाज़ुनादिर, never, not at all, कभी नहीं, which happens not at all. So these are the uh, opposite of these, ठीक है. So these seven are very important and crucial in order to make the frequencies accordingly. Like for example, always means something happens 100%, its minimum as well as the maximum frequency is 100%, so it ranges always in the 100%, usually remains between 75 to 90%, often remains, its probability remains between 60 to 85%, then sometimes its probability remains when something happens probably, so it means, or sometimes it means it ranges in between 30 to 60%. Occasionally if something happens occasionally, it means its frequency ranges between 25 to 45%. If something happens rarely, shaz or nadir, so it means its probability and its frequency remains between 10 to 30%. Then comes never, which happens not at all. So its frequency always remains zero. It is opposite of 100 and always. So always and never all should be at the extremes. Like I have written the example for these words, like always, usually, often, sometime, occasion, rarely, and never. He always comes late means he always comes late, which is 100% for this. And he never comes late means 0%. ठीक है भाई, एक बंदा हमेशा लेट आ रहा है, ठीक है, हमेशा लेट आता है, मतलब उसकी जो हाजिरी है, हिज प्रेजेंस इज 0%, ठीक है, always come late. If I say he never come late, so it's his presence in the class or in the school is 100%, so it will goes like this, it will goes downward, starting from 0% means the presence of him starts from 0, he always come late, मतलब he never comes, ठीक है. अब जो ही नेवर कम लेट, मतलब वो कभी भी लेट नहीं आया, तो मतलब ये कि उसकी हाजिरी क्या है, 100% है. Got it? Then we have the degrees of adverbs. The degrees of adverbs are same as the degrees of adjectives, like the comparative and superlative, how to make them, and the rules are also same, but there are some words like the irregular degrees, and like the word badly, worse, and worst. So such types of words are also exist in the irregular degrees of words. At last we have an adverb only. Only is a word which changes its meaning according to the position into a sentence. देखें, only एक ऐसा वर्ड है जब भी हम सेंटेंस में इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो ये अकॉर्डिंगली अपना मीनिंग भी उसी तरह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है. लाइक ही ओनली रोट मी अ लेटर, he only wrote me a letter, then he wrote me only a letter, only he wrote me a letter, and he wrote only me a letter. देखें, he only wrote me a letter, उसने सिर्फ मुझे लेटर ही लिखा और कुछ नहीं लिखा या और कुछ नहीं किया. he wrote me only a letter, ही ओनली रोट मी अ लेटर. इसका मतलब है कि भाई उसने सिर्फ मुझे ही लेटर लिखा, लेकिन इसका मतलब है ही रोट मी ओनली अ लेटर, उसने मुझे सिर्फ लेटर ही लिखा, बाकी जो और कुछ नहीं किया. अच्छा, ओनली ही रोट मी अ लेटर मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक ही बंदे ने मुझे लेटर लिखा. ही रोट ओनली मी अ लेटर मतलब बहुत सारे लोगों को वो लेटर लिख सकते थे, लेकिन उसने सिर्फ मुझे ही लेटर लिखा. So this was all about the adverbs. So if you have any question regarding the adverbs and the previous topics, so you can let me know in the comment box. So see you in the next topic in next video.